Good morning, dear kids. I'm taking you exercise 12.2. Let's start. In 12.2, your first problem says that there is a park in the shape of quadrilateral. So it's a shape of quadrilateral, a rough quadrilateral I'll draw. Something like this. Okay, in that it is said that if it is a quadrilateral ABCD, I'll name it as ABCD. It is said that C is 90. So here I'll put 90 degree. AB is 9. So I'll put here 9. BC is 12. So I'll put here 12. CD is 5. So I'll put here 5. And AD is 8. So I'll put here 8. How much is the area occupied? Now you can see that there are two triangles in this quadrilateral. Yes. So we have to find the area of these two triangles, of course, ABD and BCD. When you see BCD, to find the area of this triangle BCD will be quite easy because you have a right angle. So you can directly write in triangle BCD, area of BCD, area of triangle BCD is equal to half base into height. So that will be half into 12 into 5. From there you will get the area of half triangle, which is a right angle triangle. But about ABD, there's nothing given that some angle is right angle. So you cannot take the formula of half base into height. But for that you can go for Heron's formula to find the area of ABD. For Heron's formula also, my dear kids, you need the side BD. How you will get the side BD? Yes, you can get it if you take Pythagoras of this triangle BCD. If you take 12 square plus 5 square, you will get BD square, and from there you will get the value of BD. Once you got the value of BD, my dear kids, it becomes easy for you to find the area of ADB by Heron's formula. I hope you remember the Heron's formula which we have done in our last video. That is S minus B and S minus C. I think my pen is not working properly. It is S minus A, S minus B, S minus C. And what is S here? It's a semi-perimeter. For that, you have to first find the perimeter of ABD. Once you got BD, my dear kids, BD आपको आ जाएगा 13 because it's a Pythagorean triplet 12, 5 and 13. तो BD आपकी वैल्यू आ जाएगी 13. तो जैसे ही आपको BD आ जाता है 13 मीटर्स, आप पहले पेरीमीटर फाइंड कर दो. AB plus AD plus BD, that is 9 plus 8 plus 13. Once you got perimeter, find semi-perimeter, apply Heron's formula in ABD, and once you apply Heron's formula in ABD, you will get the area of ABD. You have to add with BCD, area of BCD, and finally you will get the area of entire quadrilateral. In our next, we have find the area of quadrilateral in which AB is 3, BC is 4, CD is 4, DA is 5, AC is 5. Let's see. So I'll draw a quadrilateral here. A, this is D, this is C. Here I'll put B. And I have been given all the sides. Let's measure. AB is given as 3. I'll put 3 here. BC is given as 4. I'll put 4 here. CD is 4. 4 here. DA is 5. And AC is 5. So you have all the sides available with you. My dear kids, now what you will be doing? Shall we start? Yes, if you want, what you can do is, if you know that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet, in that case, if your Pythagoras theorem is proved, that means angle B is 90. So again, if angle B is 90, you can take area of ABC by half base into height. तो इसकी एरिया आप हाफ बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हो. Yes or no? Yes. But for this triangle, this is an isosceles triangle because two sides are same. But I will not give you isosceles ka formula of area. We will go better with Heron's formula. Getting my point? For a triangle ADC, prefer to find the area by Heron's formula and get your two areas and add them. What was the difference between previous problem and this problem? In my previous problem, it was given that one angle was 90 degree. So we directly got by half base into height, we got the area. But here,
Here it is not given that angle B is 90, but what did I do? I tried to go for Pythagorean triplet, and if Pythagoras theorem is proved, we can say that angle B is 90. And yes, Pythagoras theorem will be proved because 3, 4, 5 are Pythagorean triplet. If you go for 3 square plus 4 square, and you will find this is equal to 5 square. This will be 25, 9 plus 16, and this will be 25. Hence, you can say that AB square plus BC square is equal to AC square. That's the reason Pythagoras theorem is proved. And if Pythagoras theorem is proved, angle B is 90. You can use the area formula, that is half base into height, in your this triangle ABC. Once you got this triangle area, you can add up with your ADC triangle area, which you have just got it with the help of Heron's formula, and you can add it and you will get the final answer. Will that be fine with you? Yes. Perfect. Next we have, let's read out the question. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper. Now first you have to make out what the figure consists of. Let me zoom a bit. Okay, you can notice here there are many triangles here. Okay, and they have given you number 1, 2, 3, 4, 5. Can you see it here? I'll mark this as number 1, 4, 5, 2, 3. So you have to keep on finding the areas and you will get the stuff. Yes, your number 1, if we just see number 1 triangle, I'll erase this. Number 1 triangle is this one. Okay, if you could see here, you have been given 5 centimeter, and of course it's an isosceles triangle, so this will also be 5 and the base is 1. What you can do is you can find the perimeter of this triangle, find the perimeter, find the semi-perimeter, use the Heron's formula and find the area of this triangle. Will that be fine for you? Yes. So you will get the area of this triangle. I'll mark it as yellow because you got this triangle. Now you will jump on to next part, that is your 2. So I'll mark this as 2. Now if you notice about 2 is forming as a rectangle, and in that it is given width is 1 centimeter and length is 6.5 centimeter. You have length and breadth, my dear kids. Can you not find the area of this rectangle? Yes, you can find. Next I will jump on to third, which is bit down. So I'll just zoom the screen. Okay, it's here. It is in the form of a trapezium, if you notice here. Yes, in that you can notice that base is given as, okay, I'll just check with the screen. I guess mera base yahan pe nahi aaya. It is 2 centimeter. Getting my point clear? Yes, what we will do? Okay, if I take this third as a trapezium, it will be something like this. 2 centimeter here, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter. Okay, so we will find the area of this trapezium. How to find the area of trapezium? Can we just go for, we do not have the height of this, so I cannot use the trapezium formula, but I can go for, can I just make this as a parallelogram and this as a triangle? Can we give a try for this? Area of parallelogram we can add with this area of this triangle. Okay, so we can go for like this. We can have, now if I try this as triangle, तो ये आपका 1 centimeter, ये 1 centimeter, ये 1 centimeter. मतलब in a way you got in a trapezium this as equilateral triangle and this as parallelogram. Are you getting my point clear? Okay. From there, first you find the area of this equilateral triangle. You can go for root 3 upon 4 side square. With root 3 upon 4 side square, that means you will put root 3 upon 4 into 1 into 1. Am I correct with this? Once you got that, you will get 0.43. So, एक बार आपको इसकी एरिया आ जाती है. Now what you can do is, if you want to find the height, you will use area of triangle is equal to half base into height. एरिया ऑफ ये ट्रायंगल जो रेड कलर मार्क्ड है उसकी एरिया आपको 0.43 आ गई है.
इंटू हाफ, बेस आपका 1 है, हाइट आपको फाइंड करनी है, तो हाइट आपकी आ जाएगी 0.43 इंटू 2, दैट इज 0.86 सेंटीमीटर। तो अब आपको ट्रेपेजियम की हाइट पता चल गई, क्योंकि जो ट्रायंगल की हाइट है वही आपके ट्रेपेजियम की हाइट होगी। एम आई करेक्ट विथ दिस? सो हाइट आपको पता हो गई 0.86. नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक, आई जस्ट जूम इन so I get a screen. Okay, now what you can do is, now you can take area of trapezium. How you will find area of trapezium now? Now you have half sum of parallel sides you have in your hand into height which you have in your hand. Half sum of parallel side, that is 1 plus 2 into height, that is 0.86. इससे आपको मिल जाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब आपका थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा. Clear with this? Now we'll jump on to fourth part, and my fourth part is here. I can see here this is a right angle triangle. Here also I can see that's a right angle triangle. In that we can go for, we have been given the measurement. Let's see. Yes, on the right hand side I can see that the base is 1.5 and the height is 6. So I can go for half base into height. So I will get that area triangle. And on both the sides, if you are making a paper plane or whatever you are making, it will be symmetrical. On both the sides, the triangle will be of same side. So I will say 4 and 5 को आपने 5 अगर find कर दिया तो वही आपका 4 का भी area होगा. So in a way you got all the areas of different triangles and trapezium and rectangles. You have to just add them and find the area of the entire paper used making this aeroplane. Clear? Shall we jump on to our next part? Okay, let's see what it says. It says a triangle and the parallelogram have a same base and same area. If the sides of a triangle are 28, 26, 30 and the parallelogram stands on its base, find the height of parallelogram. Now what we have been given, let's see first. It is given that parallelogram and triangles, that though both of them have equal area. So what I will write, that parallelogram and triangle have equal area. तो हम लोग को डायमेंशंस किसके दिए हुए हैं? ट्रायंगल के डायमेंशंस दिए हुए हैं. क्या दिए हुए हैं? 26, 28, 30. First what you will do, step number 1, find perimeter. Step number 2, find semi-perimeter dividing by 2. Step number 3, use Heron's formula. So once you got this, you will get everything. You will get the area of this triangle. Now इसी triangle की area के ऊपर एक parallelogram खड़ा है, और वो ऐसा parallelogram है कि जिसने base triangle का ही use किया है, मतलब 30 use किया है. Getting my point clear? Now what you have to find, you have to find the height of this. अरे ये समझने वाली बात है कि अगर मुझे एरिया आ गई इसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मतलब जो एरिया मेरी हिरॉन्स फॉर्मूला से यहाँ पे आने वाली है ट्रायंगल की, मेरे ख्याल से आपकी एरिया 336 आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल की, वही आपकी एरिया हो गई पैरेललोग्राम की. तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. ठीक है, पैरेललोग्राम की एरिया मेरी 336 आ गई, जो कि ट्रायंगल की एरिया है वही सेम है. बेस इसलिए मैंने 30 लिया क्योंकि बोला गया है कि जो पैरेललोग्राम है वो आपके ट्रायंगल के बेस पे खड़ा है. सो फ्रॉम देयर कैन यू गेट विद द हाइट? यस. ओके, लेट मी जस्ट चेक. एंड द पैरेलल, ओ बेस इज 28 गिवन. आई एम सॉरी, मैंने बेस आपका 30 ले लिया है और 30 से किया है. यहाँ पे दिया हुआ है कि बेस आपका 28 है, तो आपको जो यहाँ पे बेस लेना है वो 28 का लेना है. सो हियर ऑल्सो दैट मीन्स द बेस ऑफ ट्रायंगल ऑन विच पैरेललोग्राम इज स्टैंडिंग, दैट इज 28. सो वंस यू डू विथ दिस, दैट इज 336 अपॉन 28. क्लियर विथ दिस? चलो प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाते हैं. लेट्स सी व्हाट इट सेज. इट सेज अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48. तो पहले तो मैं एक rhombus ड्रॉ कर देती हूँ. So this is your 48. This is the longer diagonal.
and side is 30. So we got that for a while. And now how much area of grass field will each cow be eating? तो पहले चलो हम लोग एरिया कर निकाल देते हैं. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इज, अब हम लोग क्या पहले इसको नाम दे देते हैं. विल गो फॉर ए बी सी डी. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाट वी विल डू इज, अगर ये रोम्बस है तो वी आर नोइंग दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं और मैं कंसीडर कर रही हूँ आपका ये ट्रायंगल, तो मेरे पास तीनों साइड्स हैं. कैन आई फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बी सी डी? वंस आई गॉट द पेरीमीटर, व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑल्सो, बिकॉज मेरे हेरॉन्स फार्मूला में सेमी पेरीमीटर बहुत एसेंशियल है. सो हेरॉन्स फार्मूला के लिए हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. और हेरॉन्स फार्मूला से मैं इस ट्रायंगल की एरिया भी फाइंड कर दूंगी. ठीक है, तो इस ट्रायंगल की एरिया आ गई मेरी ट्रायंगल बी सी डी की. ठीक है, 432 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आना चाहिए. अब ये आपको पता है कि अगर ये रोम्बस है तो इसका जो डायगोनल है वो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. तो अगर मैं देखूं तो इस साइड की भी एरिया मेरी 432 ही आएगी. तो टोटल रोम्बस की एरिया क्या बन जाएगी? टोटल रोम्बस की एरिया बन जाएगी 432 प्लस 432, दैट इज 864 मीटर स्क्वायर. राइट. यहाँ पे अब क्या कहा है कि अगर यहाँ पे 18 काउज ग्रेस कर रहे हैं तो ईच काउ कितना ग्रेस करेगी? सो नेचुरली यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हाउ मच एरिया ईच काउ विल बी गेटिंग, विल बी 864 डिवाइडेड बाय 18. सो ईच काउ ग्रेजिंग एरिया will be total area upon number of cows, that is 864 upon 18, and you will get the final answer. Is that clear? चलो आते हैं नेक्स्ट पे. Next says an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, as you can see here, each piece measuring 20 by 50 by 50. Okay. हाउ मच क्लॉथ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड. अब देखो ईच कलर के पीस के हम लोग पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बन रहा है 50 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये आपका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर बन जाएगा. वंस यू गॉट द सेमी पेरीमीटर, आप हेरॉन्स फार्मूला से एक ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर दो. मैं 1 ट्रायंगल की बात कर रही हूँ. पहले 1 ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि कितना लेना है. हेरॉन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. जिन्हें पता है ए बी सी, दीज आर नथिंग बट द साइड्स. ओके, साइड्स ऑफ ट्रायंगल. नाउ व्हाट यू विल सी, जब आपके पास आ गए एक ट्रायंगल की एरिया आ गई, अब आप काउंट करो. थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप काउंट कर पाओ कि इसके पास टोटल कितने पीसेस हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इसके पास टोटल 5 पीसेस हैं. तो व्हाट यू विल डू, जितना एक का आपका एरिया आएगा हेरॉन्स फार्मूला से, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से. गेटिंग माई पॉइंट. तो आपका टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड आ जाएगा. अभी देखा जाए तो ये आपको फ्रंट पार्ट दिखाया गया है, तो ऐसे 5 ट्रायंगल्स पीछे के पार्ट पे भी होंगे और इक्वली डिवाइडेड कलर्स है ना. गेटिंग माई पॉइंट. अगर 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं तो 5 ब्लू हैं, 5 वाइट हैं. तो ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल को मल्टीप्लाई बाय 5 कर रही हूँ तो 5 का मेरा ब्लू का एक आ गया एंड देन अगेन वाइट का इक्वली आएगा. सो यू जस्ट मल्टीप्लाइंग विद 5. इफ यू विल मल्टीप्लाई विद 10 यू विल गेट द एंटायर टोटल. आपके पास कितना क्लॉथिंग है वो 10 के लिए आ जाएगा. अगर आप 5 से कर रहे हैं तो आप 5 मतलब आप ईच कलर की क्लॉथ एरिया बता रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर.